So what do we mean by div tag? Div tag in HTML defines the division, or you can say sections in the document. Div tag is the container of HTML elements. That means in a div tag, you can have multiple HTML elements. In a div tag, we can have paragraph, we can have anchor tag, we can have image tag, so that we can create a particular section. अब इन दो पॉइंट्स को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले हर वेबसाइट लगभग div tag को यूज करती है टू क्रिएट सेक्शंस और टू डिवाइड पेज लेआउट अकॉर्डिंगली। मैं आपको फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल देता हूं। अब सपोज कि आप लोगों को एक वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट का लेआउट लगभग आपको फ्लिपकार्ट जैसा चाहिए। सो हाउ यू कैन डिजाइन सच लेआउट? So guys, with the help of div tag, you can create this layout. Even if I show you the code behind this flipkart.com, let's say ये section इन्होंने एक div tag के थ्रू बनाया हुआ है, ये section इन्होंने एक और div tag के थ्रू बनाया हुआ है, ये जो banners हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये banners भी हमको एक div tag के थ्रू डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, इन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए भी फ्लिपकार्ट ने क्या यूज किया है? div tag का, so that they can create multiple sections. So this is your section number 1, section number 2, section number 3 and so on. If you want to check this, आप इसको चेक कर सकते हो बहुत ही इजीली। आपको बस flipkart.com पे राइट क्लिक करना है and you need to select the last option, inspect. It will show you the code behind this page. So if I go to inspect element, यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे div tag फ्लिपकार्ट ने यूज किए हुए हैं। अब अगर मैं पहले div tag को सिलेक्ट करूं या सेकंड div tag को सिलेक्ट करूं, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि ये टॉप ऑफर्स, ग्रोसरी, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, ये सारा सेक्शन सिलेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर इस div tag को यूज किया हुआ है इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, बात करते हैं प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन की। तो अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज बीन डिस्प्लेड इन अ div tag। जैसे मैं इस वाले div tag को राइट हैंड साइड की तरफ सिलेक्ट करूंगा या जैसे ही मैं अपना माउस का कर्सर लेके जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि आपका ये प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने सेकंड पॉइंट आपको क्या रीड आउट करके दिखाया था कि div tag contains multiple HTML elements, means it's a container for different HTML element। अब जैसे ही मैं इस div tag को एक्सपैंड करूंगा, आप देख सकते हो कि इसी div tag के अंदर हमारे पास एक एंकर टैग है। ये एंकर टैग आपको प्रोडक्ट के पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसी के बाद यहाँ पर हमारे पास एक इमेज टैग भी है एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये एक्स्ट्रा 10% ऑफ, ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिमिलर div tag के अंदर है। सो div tag इज अ कंटेनर ऑफ मल्टीपल HTML एलिमेंट। सेकंड प्रोडक्ट की तरफ चले तो आप ये देख सकते हो कि सेकंड प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने एक अलग से div tag का यूज किया हुआ है। सो गाइस, div tag plays an important role, especially when you are going to design the layout of your web page। और लगभग सभी वेबसाइट div tag को यूज करती है so that they can create sections in their web pages। So I hope that these 2 points are clear to you. Let's move towards the next point. It is easy to apply styles and script to the HTML elements when they are inside the div tag with the help of the attributes of the div tag। Means you can apply styles very easily to your div tag with the help of some attributes. The class and ID attribute help in styling and applying scripts to the HTML element inside the div tag। Let's say you want to apply a style to your div tag कि आपका div tag थोड़ा सा bold नजर आए, उस div tag के चारों तरफ एक border बना आ जाए, तो you can very easily use this class and ID attribute। Later on, practically, I'll show you that how you can use this class and ID attribute in order to apply style to your div tag। So, div tag is a block level element, so there will be a line before and after the div tag। So guys, please remember this point that div tag is a block level element। Means every time you are going to use div tag, it will appear in a new line because it's a block level element।
Div is the most important tag in web development because it helps us to separate the content data in the web page and help us to apply different styles and behavior to different divisions. ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के एग्जांपल के थ्रू समझा चुका हूं कि इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग बिकॉज इट हेल्प अस टू सेपरेट द कंटेंट इन वेब पेजेस. Div tag is used to group the large section of HTML together. Means in a same div tag आप लोग anchor tag का use कर सकते हो. We can use image tag within the div tag. So it's used to group the large section of HTML elements together. Div tag encapsulates HTML elements and divides the HTML documents into sections. Now let me show you some examples of div tag and then we'll move towards practical part. So let's say guys, you are going to design a website like this. Okay, हमको let's say कि इस तरीके का एक वेब पेज बनाना है. So how we can create the layout of this web page? आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर वाला सेक्शन बनाने के लिए जहाँ पर ये होम, माई नेटवर्क, जॉब्स, मैसेजिंग, नोटिफिकेशन, इसके लिए हम यहाँ पर एक और div tag बनाएंगे और लेट्स से इस div tag का हम नेम दे देंगे हेडर. राइट सेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और div tag का यूज करेंगे. इसको लेट्स से हम नेम दे देंगे साइड बार. ये वाला सेक्शन दिखाने के लिए जहां पर यूजर पोस्ट की इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकता है या कुछ पोस्ट कर सकता है, इसके लिए या ये सेक्शन बनाने के लिए भी हियर वी आर गोइंग टू यूज अनदर div tag एंड द नेम ऑफ दैट div tag विल बी पोस्ट. राइट हैंड साइड में हम न्यूज फीड्स दिखा सकते हैं, न्यू और लेटेस्ट न्यूज दिखा सकते हैं और इस सेक्शन को बनाने के लिए भी यू आर गोइंग टू यूज अनदर div tag एंड यू कैन नेम दैट div tag एज एन एक्टिविटी. So guys, one thing is very sure, whenever you are going to design the layout of your web pages, you are going to use div tag for sure. Okay, because div tag can create these kinds of sections or div tag can divide your page layout accordingly. Let me show you some more example. So let's say, अब बात करते हैं header की. If we explore a little bit more about header, तो यहाँ पर इस इमेज को आप एक div tag के अंदर दिखा सकते हो. ओके, ये जितने भी आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं, होम, माई नेटवर्क, जॉब्स, मैसेजिंग, नोटिफिकेशन, दीज आइकन्स वी कैन आल्सो डिस्प्ले इन अ सेपरेट div tag. ओके, और यहाँ पर आप इस div tag को नेम दे सकते हो navlink, network, navlink icon and so on. So very easily guys, you can design such layout using div tag. Now you may be wondering that why you are using separate div tag. So that guys की content आपस में merge ना हो जाए. Okay, we have to create website responsive as well. It is not compulsory that every time your user will going to view the website in laptop or in computer, they can view your website in a mobile device as well. तो वहां पर हमारा कंटेंट आपस में मर्ज ना हो जाए, वी कैन यूज सेपरेट div tag ताकि इसका स्टाइल और इसका स्टाइल अलग अलग रहे. So we can create one section over there and we can create another section over here. So this is how you can use div tag in HTML. Now practically I'll show you that how we can play with this div tag. So guys, here I have created one HTML file to practically show you how you can use div tag in HTML. Okay, तो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आई एम गोइंग टू यूज वन h2 टैग और यहाँ पर लेट्स से एक मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ div tag. Okay, and here I am going to create this div section or here we are going to use this div tag. Now guys, we know that in div we can have multiple HTML elements. So here I am using paragraph. Okay, and let's say here I'm going to write a very simple text. Let's say this is the demo of div tag. Okay, so this paragraph I'm going to write. Now within this paragraph we can use another paragraph. Let's say this is second paragraph. Okay, any piece of text you can write over there. And moreover, in a div tag we can also use header tags because a div tag is a combination of multiple HTML elements, or you can group multiple HTMLs together in a same div tag. So here I am going to write welcome to Skill Academy.
So now guys, here you can see that we are using one div tag. Let me save this page. अब जब मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा, आपको अच्छे से div tag अभी समझ में नहीं आएगा. Okay, so you can see that elements, or you can group multiple HTMLs together in a same div tag. So here I am going to write welcome to Skill Academy. So now guys, here you can see that we are using one div tag. Let me save this page. अब जब मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा, आपको अच्छे से div tag अभी समझ में नहीं आएगा. Okay, so you can see that this content will be displayed to you. ये div tag हमने एक h2 tag के अंदर लिखा हुआ है, और ये जो content है, ये content हमारा एक div tag के अंदर है. But you can see that div tag is not visible. It's hard to understand that whether div tag is a block level element और क्या वाकई में ये सारा कंटेंट हमारे div tag के अंदर आ रहा है. अगर मैं आपको राइट क्लिक करूं और अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट सिलेक्ट करके दिखाऊं, सो यस, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन div tag. So in order to understand div tag in a more better way, we need to apply some style to it. Okay, तो यहाँ पर इस div tag में I'm going to use one style attribute so that कि आपको div tag की working exactly नजर आ जाए. So first style will be I'm going to add border around my div tag. ओके, सो एक बॉर्डर हम यहाँ पर बना देते हैं so that कि आपको ये H3 ये दो पैराग्राफ इस div tag के अंदर आराम से नजर आ जाए. Then in here I'm going to use border as solid. बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स की कैटेगरीज होती हैं, सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड. सो यहाँ पर मैं सॉलिड यूज कर रहा हूँ. व्हाट सॉलिड विल डू, इट विल क्रिएट अ लाइन अराउंड योर div tag. Okay, it will create a solid line around your div tag. इसको यहाँ पर एक मैं कलर देता हूँ. Let's say I'm going to give it a color as dark green, okay, or dark blue. Any color you can give to it. Okay, और यहाँ पर जितना भी content इस div tag के अंदर है, I'll add font size to it. Okay, so I will be using this font size, and let's take this 20 pixel as our font size. Now guys, the moment when I say now div tag will appear clear to you. That means the moment when I refresh the page, you can see font size apply हो गया है और आपके div tag के चारों तरफ एक border generate हो गया है. So this is going to be our another section. अब suppose करो कि इसी पेज में I'm going to use another div tag. So div tag is a block level element. Every time div tag appears in a new line, I'll just copy the same piece of code, or I'll just write some new text to it. Let's say new div tag is created. Okay, so new div tag is created. Now we need to add style to it as well so that it will be visible to you. So border, let's say this time I will be using 2 pixel as my border width, solid, and color will be dark green. Now guys, the moment when we save, so अब इस पेज में हम दो div tag यूज कर रहे हैं. Now the moment when you refresh the page, another div tag is being created. Okay, so div tag is a block level element, means it will take the entire width of your page and it always appear in a new line. It always appear in a new line. So थोड़ा सा इसको एक बार सेपरेट कर लेते हैं. So here what we can do is you can use another style. Here we can use the CSS property and value margin from the top. Okay, I'll add margin from the top, and here I'm going to add 5 pixel as margin from the top. So if I save it, and now if I refresh it, you can see that 2 div sections has been created for you. So this is going to be another section. Let's take an example कि इस section में हम कंपनी का नेम डिस्प्ले कर सकते हैं. इस section में we can create our nav bar. इसी तरीके से multiple sections भी create कर सकते हैं in order to display product information. So you need to remember 2 points, that div is a block level element. It will take the entire width of your web page and it always appear in a new line.
तो ये div tag है, ये आपको एक अलग से नजर आ रहा होगा, अलग से लाइन में, और ये div tag आपको एक अलग से लाइन में नजर आ रहा होगा. So this is how we can use div tag in HTML. So guys, div tag को अब आप style class attribute के through भी दे सकते हो. Here you can see that we are using an attribute, style attribute we are using, but we can give style to our div tag using class attribute as well. Let me show you a quick demo of it as well. So guys, here I am going to create another div tag. Okay, here I'm going to use one h2 tag. Let's say here I'm going to write this is a heading in div tag. Okay, तो h2 के अंदर मैंने ये piece of content लिख दिया. This is a heading in div tag. Here we are going to use some paragraph. Okay, आप यहाँ पर एक image को भी use कर सकते हो. So let's say here I'm going to write this is some text in div element. Okay, let's save it. जैसे अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, but one thing is very sure that this div tag is taking up the entire width and it always appear in a new line. So this time I am going to add a style to it with the help of class attribute. So guys, class attribute use करने के लिए यहाँ पर आपको use करना पड़ेगा class attribute and you need to provide a name to this class. Let's say मैंने यहाँ पर इस div tag को नाम दे दिया my div. Okay, so we are going to understand about this class attribute more in our CSS. As of now, I'm just going to give you an overview that we can add style to our div tag using class attribute as well. अब आपको क्या करना होगा कि इस my div class की information, okay, ऊपर की तरफ mention करनी होगी. Okay, let's say we are going to display or we are going to add this class properties and values at above. How you can do this? So guys, सबसे पहले यहाँ पर आपको head section में एक style tag का use करना होगा. Okay, we need to use this style tag, and within this style tag we can define the properties and the values of this class myDiv. Now here one important point you need to remember. जब आप class attribute का use करोगे, कैसे आप इसकी definition को specify करोगे? You need to use this dot operator. Okay, you need to use this dot operator, then write the name of your class carefully, and here you can give CSS properties and values in order to apply effect in your div tag. Okay, तो यहाँ पर हम style attribute use नहीं कर रहे हैं. Here we are using class attribute, और इस class के अंदर क्या क्या style रहेगी, that information you need to display inside your head section. हेड सेक्शन में आप यहाँ पर एक स्टाइल टैग का यूज करोगे और इस स्टाइल के अंदर यू आर गोइंग टू यूज डॉट एंड यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर क्लास. लेट्स ऐड CSS प्रॉपर्टी टू इट. लेट्स से फर्स्ट विल बी बॉर्डर. लेट्स से बॉर्डर विल बी 5 पिक्सल. ओके, एंड द बॉर्डर कलर विल बी रेड. Okay, here I am going to add some background color to it. Okay, and I will be using, let's say, light blue. तो ये background color हम add करें, and here I'm going to use this text alignment property कि my div के अंदर जितना भी text है, I want that text to be aligned as center. So this is how you can specify the style of your div tag. जब आप specially class attribute का use करोगे, make sure कि ये जो class name है और ये जो class name आप यहाँ पे लिखोगे, it has to be the same. Okay, do not make any spelling mistake, but do one thing, use this dot operator and then you can style and then you can add multiple style to your div. Okay, let's say here I'm going to add one more style margin from the top and let's add 10 pixel margin. Let me save this, and now if I refresh it, you can see a div tag has been created in your HTML page, and this time we are providing or we are applying style to this div tag using class attribute. Okay, so guys, here I'm going to give you a task. Try to create some multiple classes. Let's say my section, my navbar section, right hand side section, left hand side section, and do provide them some different style. Definitely you will be going to have these kinds of effect. So here it completes our div tag. Now we are going to understand next tag, and the name of that tag is span tag.
So guys, span tag is an inline container. Span tag is used to mark up part of text or content in an element. Span tag also help to apply styles and script easily with the help of ID and class attributes similar to div tag. But div is a block level element and span is an inline element. Let's understand the concept of span tag with the help of an example. Suppose you are going to use div in your HTML page. Okay, और उस div में you are going to display a little bit description about your company. अब उस कंपनी का नेम या कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई जी, दैट इंफॉर्मेशन यू नीड टू हाईलाइट in some colors. Okay, you need to display them in some capital letters, in some, or you want to add some font size to it. So how you can provide that style? So guys, very easily you can use span tag because it is used to mark up the part of the text or content in an element. Some more practical demo I would like to show you. As of now, you need to understand these points that span is an inline container. It is used to mark a part of text or content in an element. It helps you to apply styles and script easily with the help of ID and class attribute. Span can be used inside paragraph tag to apply different styles to part of the content in the paragraph tag. अब सपोज लेट से गाइस कि आपको एक div tag बनाना है और उस div tag में आपको एम्प्लॉय की नेम्स शो करने हैं और उन एम्प्लॉयज ने कब कब ज्वाइन किया था वो आपको लेट से डिस्प्ले करना है. So very easily at that point of time you can use this span tag. How? Practically I'll show it to you. So let's understand the concept of span tag with the help of this example. Guys, please focus on my screen. और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वेब पेज में यहाँ पर कनेक्शंस हैं और उस कनेक्शंस के सामने एक वैल्यू हम दिखा रहे हैं 30. सबसे पहले if you remember this particular section we can create using div tag. Okay, this section we can very easily create using div tag. So let's say इस section का हमने नेम दिया connections. अब इस connection में चूज योर नेटवर्क और ग्रो योर नेटवर्क में को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाना है और कितने मेरे कनेक्शंस है, मींस हाउ मेनी फॉलोअर्स आई हैव. ओके, और ये इंफॉर्मेशन मेरे को राइट हैंड साइड में दिखानी है. सो हियर यू कैन सी दैट वेरी इजीली वी कैन यूज स्पैन टैग. ओके, स्पैन में आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो स्टाइल, और यहाँ पर आपने क्या सीएसएस प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज कर ली फ्लोट लेफ्ट. सो ये जो कनेक्शंस है ये आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नजर आएंगे. इस तरीके से स्पैन स्टाइल फ्लोट राइट 30 वैल्यू आपको राइट हैंड साइड में नजर आएगी. ओके, सो दिस इज हाउ गाइस वी कैन यूज स्पैन टैग. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पैन इज एन इनलाइन टैग. डोंट थिंक दैट स्पैन विल क्रिएट अ न्यू लाइन. स्पैन इज एन इनलाइन कंटेनर. div is your block level container. Let me show you one more example. First, okay, have a look onto this slide. Okay, so guys, here we are writing some information about COVID-19 pandemic. Okay, and here you can see that we are using some span class highlights. Let's say इस piece of text में या इस पैराग्राफ में आपको फेस मास्क और की को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है. So here you can see that you can use span tag inside your paragraph. Okay, very easily you can use span tag inside your paragraph. और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि फेस मास्क और की के आगे हमने एक स्पैन टैग यूज कर रखा है, क्लास एट्रीब्यूट यूज की हुई है और उस क्लास को हमने नेम दे रखा है हाईलाइट. सो इफ यू वांट टू डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन व्हेन योर कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, what's the motto line of your company, so that information you can display very easily with the help of span tag. सपोज करो कि बीच में आपको अपनी कंपनी का लोगो या कोई ट्रेडमार्क है जो आपको डिस्प्ले करना है एक पैराग्राफ के अंदर. सो वेरी इजीली यू कैन यूज स्पैन टैग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इंटरव्यू क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन div and span. सो गाइस, div tag is a block level element. Span tag is an inline element. It is best to attach it to a section of a web page, and it is best to attach a CSS to a small section of a line in a web page. Div supports a line attribute. Span does not accept or support a line attribute.
Div tag should be used to wrap a section for highlighting that section. Span tag should be used to wrap any specific word that you want to highlight in your web page. For div tag, used for CSS based HTML layout, and span is used to stylize text. Text means you want to display when the company has been established, what's the motto of your company, so that information you can make more presentable or more attractive with the help of span tag. So div tag always displayed in a new line, span tag does not begin in a new line. So as of now, two important points you need to understand: that div is a block level element and span is an inline element. Div tag displayed in a new line and span tag does not begin a new line. Now practically I would like to show you that how we can use this span tag. So guys, here I have created one HTML file for span tag demo. Is body tag name I am going to use one h1. Okay, and in this heading I am going to write the span element. Okay, now here I am going to create one paragraph, and here I am going to write a simple text. Let's say first I am going to learn. Okay, first I am going to learn HTML. Okay, then I will learn CSS, and finally I learn JavaScript. Okay, so this is what I am writing in my paragraph. First I am going to learn HTML, then I will learn CSS, and finally I learn JavaScript. Okay, here you can write I will learn JavaScript. So if I save it, and if I show you the code, the output of spantag.html, it appears like normal. Now I want to make this HTML more attractive. I may want to make the CSS more attractive and this JavaScript more attractive. At this point of time, guys, you can use span tag. How? I'll show it to you. So here, first of all, span is an inline element, so it will not create a new line for you. I want to, let's say, provide a style to this word HTML. So here, I'm going to use span. I'll add some style to it. Okay, and I'm not going to close this span over here. I'll close this after HTML. Okay, and here, let's add some style to it. So color will be blue. Okay, you can use any color of your choice. Let's say dark blue. Okay, and here I'm going to make it a little bit bold. So here I will be using this CSS property font weight, and here let's make it bold. Okay, so now guys, the moment when I save it and if I refresh it, you can see that HTML will turn into blue and it will appear a little bit bold. Same, you can apply styles to this CSS and you can apply style to this JavaScript word with the help of span tag. Okay, how? You just need to copy this. Okay, you can just copy the entire span tag. Here you can paste in front of your CSS and you can close this span tag after CSS. Okay, here I'm just going to change the color. Let's make it as dark magenta. Okay, so any color you can select, just save it. Now same thing I am going to repeat for this JavaScript. I will be using one span tag. Okay, I am going to change the color. Let's say I will be using a little bit orange color. Okay, so here I am going to select a color. Let's say dark orange. Okay, and now here I am going to close this span tag after JavaScript. So what will happen now if we refresh the page, your CSS will be styled and your JavaScript will be styled. Let's take an example. You are going to display some company information and you need to display a trademark. You need to display motto line, or you need to display when your company has been established. So that piece of information, okay, you can display with the help of span tag. So guys, let me show you some more example of span tag, that how you can use div tag and span tag all together.
So here, after this paragraph, I'm going to create one div tag, okay, or I will be using one div tag. Here, I'm going to use class attribute, okay, and in this class attribute, I'll give it a name as my div. Now guys, within this div tag, I will be using some HTML elements and I will be using span tag as well. So first of all, here I'm going to use h2, let's say my friends. Okay, so you can write this information, my friends. Here, I'm going to use span tag. Okay, in this span tag, let's say I'm going to write friends. Okay, I'm going to write this information, friends. And here I'm going to use one more span tag. And here I'm going to write, say, I am having 45 friends. Then here I'm going to use one BR tag, and here I'm going to use an H3 tag, and here I'm going to write make more friends. Okay, so this is how I'm going to use div tag and span tag all together. If I now save this, and as of now let me refresh, this is how it will appear. We know that div tag is a block level element. This information will be displayed to you in a new line, and this div tag will going to occupy the entire width. Let's add some style to it. So here in my head section, I will be using this style tag, and here I'm going to provide CSS properties and value to my div class. So the first property will be border. Let's say border will be 5 pixels solid, and I will be using this maroon color. Let's save it, refresh the page, and you can see one border will be generated. Now guys, this friends I want to display on left hand side, and this 45 I want to display on right hand side. So how we can do this? With the help of span tag, you can do it very easily. First of all, let me add some more properties over there. Margin from right, let's say I'm going to add 80 pixels. Let's add margin from the left, and here I'm going to write, let's say 40 pixels. So guys, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से मार्जिन दे रहे हैं हमारे डिव टैग को। अभी डिव टैग आपको पता है कि पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है, बट जैसे आप यहाँ लेफ्ट से मार्जिन दे दोगे, राइट से मार्जिन दे दोगे, योर डिव टैग विल बी एडजस्टेड लाइक दिस. So that means margin from left has been added and margin from right has been added. अब ये जो 45 है ये मेरे को राइट हैंड की तरफ दिखाना है और फ्रेंड्स मेरे को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिखाना है. So here we are going to use span tag for it. So we need to scroll down and here I'm going to add a property to it. Okay, so सबसे पहले यहाँ पर मैंने style attribute यूज किया और यहाँ पर मैंने CSS की प्रॉपर्टी float ले ली और यहाँ पर हमने यूज कर दिया left. Now what this float left will do? It will display friends on left hand side, and if you copy this style over there and if you change this float property from left to right, this 45 information will be displayed on right hand side. Float means कि ये टेक्स्ट आप लेफ्ट साइड में दिखाओ और फ्लोट राइट मीन्स ये टेक्स्ट आप राइट हैंड साइड में दिखाओ. अभी फिलहाल हमारा लेआउट कुछ इस तरीके से था. अब हमने यहाँ पर इसको लेफ्ट की प्रॉपर्टी दे दी और इसको हमने राइट की प्रॉपर्टी दे दी है. नाउ द मोमेंट व्हेन वी रिफ्रेश द पेज यू कैन सी that friend will appear on the left hand side and this 45 will appear on the right hand side. So this is how guys we can use div and span tag together. Div is a block level element where span is an inline element. It will not create a new line. It will add effect within your div tag. I hope you get an idea कि आपको एक कंपनी की डिस्क्रिप्शन दिखानी है, उस कंपनी में आपको उसका ट्रेडमार्क दिखाना है या आपको उस कंपनी का मोटो दिखाना है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क. मैं यहाँ पर आपको एक टास्क देता हूँ, आप एक डिव टैग बनाओ. उस डिव टैग के अंदर यू नीड टू यूज अ पैराग्राफ. उस पैराग्राफ में राइट सम 7 to 8 लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंपनी. नाउ उसी पैराग्राफ के बीच में यू नीड टू डिस्प्ले द मोटो टैग कि जैसे सपोज करो हमारी कंपनी का मोटो है learn together. Okay, so that learn together thing you need to display in some color, you need to display or you need to highlight them, and you need to display some logo of your company as well.
Give it a try guys, very easily you can design such stuff using span tag. So that's it for in this video guys. In this video we discussed about div and span tag of HTML.